बेसल न्यूक्लियाई। उससे पहले कोई डाउट है तो आप पूछे, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करें। कोई डाउट नहीं है? हो गया स्टार्ट। बेसल न्यूक्लियाई व्हिच इज आल्सो नोन एज बेसल गैंग्लिया, करेक्ट नेम इज बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई की स्ट्रक्चर्स, so first is what is nuclei? What is nuclei? It's a bunch of we can say collection of cell bodies. This is the cell bodies. These are the multiple cell bodies. These are the cell bodies, and here we have the axon fiber. Collection of cell body surrounded by these axonal fiber. The gray this cell body will form the gray matter, and axon will form the white matter. So this structure is known as nuclei. Nuclei means when gray matter which is present in the center and surrounded by a white matter, that is known as nuclei. Here we have the basal nuclei, and in basal nuclei we have three nuclei. As we already discussed in the last class, the one is globus pallidus, putamen, and caudate nucleus. Caudate nucleus. So we have to arrange these three structures. कि ये कहाँ होती है, ब्रेन में हमें इनको अरेंज करना है और इनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना हमें देखना है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेगी, देखें आप इनको. The first thing is this basal nuclei is present on the lateral side of the most of the part of this basal nuclei is on the lateral part of the thalamus. Thalamus जानते हो? Thalamus is the part of our which diencephalon or this telencephalon. Diencephalon. So these are the oval shape two thalami, right and left. So this is the first thalamus, right, and here we have the left thalamus, right and left thalami. Simple structure of thalamus जो हम बना रहे हैं अपने. One is right thalamus, second one is left thalamus. On the lateral part of these thalamus, in this ये इधर lateral और इसका इधर right lateral and left lateral, there is a lens shaped structure. In lateral part of the thalamus there is a lens shaped structure. Here we have a lens shaped structure. It will be like this, a lens shaped structure, and this lens shaped structure present on both sides of these thalami. On the both side of thalami we have a lens shaped structure. This lens shaped structure is known as lentiform nucleus. Lenti means lens. Lentiform is related to lens shape. So lentiform nucleus, it is a lens shape. ये 2D है, 3D देखोगे तो जो lens होता है वैसा दिखेगा. So ये क्या हो गया आपका lentiform nucleus. So where is the location of lentiform nucleus? On the lateral part of thalamus, either side on the lateral side of the two thalami, the lens shape structure which is known as lentiform nucleus. Now this lentiform nucleus is having two part. This is having two part. This is the first one in purple color, and one is in a blue color. So this is the first one, and here we have the second one. This first purple color is known as globus pallidus. So this first structure which is in purple color, this structure is known as globus pallidus. Globus pallidus. Oh, I should not write here. Yes. क्या बोल रहे हैं? एयर गेट बंद करें? बंद क्यों कर रहे हैं? डक्ट बंद कर रहे हैं? डोर बंद कर दो भाई. क्या है डोर में, क्या है? So here we have the globus os. आपके चक्कर में सारा इधर कवर हो गया. It is very difficult to draw again and again. ये एक ही बार बनता है दिमाग में बस. So this is known as globus pallidus, and this structure is known as putamen. It means the lentiform nucleus. This is the lentiform nucleus. It is composed of two nuclei. One is globus pallidus and second one is putamen. यहाँ तक clear? Next third, हमने बोला था स्टार्टिंग में कि in basal nuclei there are three nuclei. One is globus pallidus, second one is putamen, and third one is caudate nucleus. So first I will show you the caudate nucleus कैसा दिखता है, उसके बाद उसमें हम उसको put करेंगे. So caudate nucleus is a type of structure which is in a coma shaped structure. Caudate nucleus, it's a coma shaped structure. कोमा जानते हो, हिंदी में कोमा होता है ना, वैसे ऐसे कोमा लगाते हो आप. कोमा shaped structure. It is three part: the head, body and tail. कैसा दिखता है ये caudate nucleus, देखें यहाँ पे. So it will be look like this.
This is the caudate nucleus, and at the end of this caudate nucleus there is a structure which is not the part of basal nuclei, but it is the structure which is present here. So this is the caudate nucleus. This is the head of this caudate nucleus. Here we have the body and then a large long tail. This is the tail part of the caudate nucleus, and this structure is known as amygdala. This is the part of limbic system. आगे पढ़ेंगे इसको हम अभी. So this is the structure which is known as caudate nuclei or nucleus. So three structures clear हो गई. पहला क्या है? Globus pallidus. Second one is putamen and third one is caudate nucleus. अब हम इस caudate nucleus को इधर ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे कैसे प्रेजेंट रहेगा हमारे इस पिक्चर के अंदर. So यहाँ पे caudate nucleus की बात करें, हाँ, this will also have the two part. This is the globus pallidus and this is the putamen. Now, so the head part of the caudate nucleus is situated over the lentiform nucleus. Caudate nucleus का head कहाँ रहेगा? Lentiform nucleus पे रहेगा, and then it will be go like this. So मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा अभी. Okay, this is the head and here we have the body and then it will be going on like this and then it reaches to this part. Clear? And here we have the structure which is known as amygdala. So this is the structure which is known as caudate nucleus. Caudate nucleus. This is the head part of the caudate nucleus. This is the body and then next we have the tail part of the caudate nucleus. Clear यहाँ तक? Now, same इधर भी होगा. Either on this side we also have the same structure. So this is the again head, body and then tail of this caudate nucleus. And here we have the. Now, as in anatomy, जब आप anatomy की बात करते हैं तो this is the basal nuclei. Anatomically अगर हम discuss करें तो basal nuclei is having three nuclei. That is globus pallidus, putamen and this is the caudate nucleus. Oh, I should not be right here. इधर लिख देता हूँ मैं. नहीं क्या हो रहा है? Caudate nucleus. फिर यहाँ तक ये तीनों structure, globus pallidus, putamen and caudate nucleus. Collectively, these three are the part of basal nuclei. Now, this lentiform nucleus and this caudate nucleus, collectively known as corpus striatum. These two structure commonly known as corpus striatum. PUS, corpus striatum. And this corpus striatum is the basal ganglia. इसी को हम क्या बोलते हैं? Basal ganglia. तो ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी यहाँ पे, ये कौन सी है? दिस इज एन एनाटॉमिकल पिक्चर ऑफ योर बेसल न्यूक्लियाई. बट अगर हम इसको फंक्शनली बात करें तो फंक्शनली इट लुक डिफर. फंक्शनली इसके अंदर टोटल 5 स्ट्रक्चर्स होती है. सो ये भी एग्जाम में कभी-कभी पूछ लेते हैं. एनाटॉमिकली देयर आर 3 स्ट्रक्चर व्हिच फॉर्म द बेसल न्यूक्लियाई. दीस आर ग्लोबस पैलिडस, पुटामेन एंड caudate nucleus. बट फंक्शनली वी हैव टोटल 5 स्ट्रक्चर. 3 आर जो ये हमने बनाई वही है और 2 एक्स्ट्रा आपको फंक्शनली मिलेगी. वो कौन सी है देखते हैं. सो नाउ ओके, अगर हम इसको सेरिब्रम ड्रॉ करूं मैं यहाँ पे पूरा ब्रेन ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको इसमें. So आपका जो cerebrum होगा, it will be right like here. This is the first lobe, right cerebrum, and here we have the left cerebrum. This is the cortex part of the cerebrum, and this is the diencephalon part of the cerebrum, middle part होगा आपका, and it will be going like this. This is the cerebrum. After ending the cerebrum, here we have the which part came after cerebrum. This is the forebrain, then midbrain. Here we have the midbrain, and then hindbrain is having pons, and here we have the pons, and then medulla oblongata. And then spinal cord. So it will be like this. This anatomy और brain के अगर structures की बात करें तो ये ऐसा आपको दिखेगा. It will be look like this. This is the cortex part of the brain, our peripheral part, and in center we have the nucleus, various nuclei which is present deep of the brain and surrounded by white matter. Just below this caudate nucleus and thalamus, जो आपका thalamus और caudate nucleus है, इसके नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे, at this part, here we have the specialized group of neuron, or we can say collection of cell body, gray matter. This is the collection of cell body or specialized neuron. These are present just below the thalamus. Below the thalamus. If any structure which is present below any structure, this is known as sub or epi. Below, sub and upon epi. ये तो clear है concept? Any structure which is present in below, that is known as sub. And any structure which is present in upper part or upon, that is known as epi. So this structure present below the thalamus. That's why it is known as subthalamic nuclei. That's why this is known as subthalamic nuclei on both sides of the brain. Subthalamic nuclei. So these are the two subthalamic nuclei. Next, here we have the midbrain. In our midbrain, there is one more specialized group of neuron, which is very, very important for your exam.
And this specialized group of neuron is known as, it is present in midbrain. This is the midbrain from here to here. It is known as, this area is known as substantia nigra. सुना है? Substantia nigra. So this is the substantia. The substantia nigra which having two type of neuron, pars compacta and pars reticularis. आपने पहले सुना होगा. सुना है नहीं सुना है? Pars compacta and pars reticularis. Pars compacta is responsible for the formation or release of dopamine, and pars reticularis is responsible for the formation of gamma aminobutyric acid. And that's why in case of Parkinson disease, the substantia nigra is damaged. सुना है Parkinson? In Parkinson disease, the substantia nigra is damaged, and because of the damage in substantia nigra, no production of dopamine, and when dopamine is not there, then person is having Parkinson disease. समझा? नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाऊंगा Parkinson में डिटेल में. So now we have 5 areas. First one is globus pallidus, putamen, caudate nucleus, substantia nigra, and this subthalamic nuclei. These 5 areas or these 5 part of the brain functionally considered as a part of basal nuclei. So दो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पढ़े. One is anatomical classification and second one is functional classifications. तो this is the structure I think कैसा बनता है I don't know. देख सकते हैं आप इसको. तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स आपके ब्रेन के अंदर बनेगी. एंड so this is the cortical part, cortex part. ये बाहर वाला peripheral part कौन सा होगा? Cortical part. It's a cortex part. इधर वाला part. This is the cortex. And inner part is not medulla. In cerebral cortex and nuclei. Inner जो भी होगी structures वो क्या बनाएगी? Nuclei. So it's a part of diencephalon. बीच में जो है ये diencephalon है. बाहर कौन है? Telencephalon. बड़ा करें? Telencephalon. Clear? हटा दे? बड़ा करें? Clear? So this is the structure of our basal nuclei. Now we have the two types of classifications of basal nuclei. One is anatomical classification and second one is functional classification. I will tell you why these two structures are considered as a part of basal nuclei in functionally, not anatomically. So here we have the two types of neuron. One is pars compacta and second one is pars reticularis. This is for dopamine production and this is for GABA, gamma aminobutyric acid GABA. This area produces the dopamine. This dopamine will reach here in this corpus striatum. जो डोपामिन आपका सब्सटेंशिया निग्रा से बनेगा वो कहां पहुंचेगा? कॉर्पस राइटम या बेसल न्यूक्लियाई में, और उस डोपामिन के थ्रू बेसल न्यूक्लियाई क्या करेगा? अपना फंक्शन करेगा. एंड दैट्स व्हाई दिस एरिया एंड दिस एरिया इट आल्सो प्रोड्यूस डोपामिन. सो दीस टू एरियाज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ basal nuclei as a functionally only because they are producing special type of neurotransmitter which required for the normal functioning of basal nuclei. बना लिया? तो जो हमने कल लिखा था वो क्लियर हो गया? जो भी आपने कल लिखा था सारा बन गया? इधर क्लियर हो गया? कुछ बच तो नहीं गया? अभी हम लिख लेते हैं फंक्शनल एंड एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन. जस्ट ट्राई टू फॉर्म, अपने हाथ से घर पे बनाने की कोशिश करें. बहुत इजी सा है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी यहाँ पे. मेरा ये मूव करें. नेक्स्ट बिफोर स्टार्टिंग ब्रेन जो हमने स्टार्ट और क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन. यही पेपर मॉर्निंग में है 4:30 टू 6. नेक्स्ट, सो अगर हम बेसल न्यूक्लियाई की बात करें, दिस हैव टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. वन इज एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज फंक्शनल. In anatomical classification, here we have three structures: the globus pallidus, putamen, and the
caudate nucleus. And in functional classification सेम 3 स्ट्रक्चर जो इधर बनी हुई है वही सेम इसमें भी रहेगी. ग्लोबस पेलाइटस, सेकंड वन इज फुटामेन, and third one is caudate nucleus. But the difference is here we have two more structure. One is subthalamic nuclei and the substantia nigra. So these 5 structure come under the functional classification of basal nuclei and 3 structure in the anatomical classification of basal nuclei. Next is the function of basal nuclei. क्या काम करता है ये? वो करें. For the healthy functioning of basal nuclei, you have an adequate balance between this dopamine and one more system, that is cholinergic system, acetylcholine. लिख लिया. आगे हम पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज. Like this is the basal ganglia or basal nuclei, and here we have two system. One system is the dopaminergic system and second one is the cholinergic system जिसमें आपका ACH होता है, acetylcholine. For the healthy functioning of this basal ganglia or the normal functioning of basal ganglia, you require balance between these two neurotransmitter. If disturbance occur in any one neurotransmitter, like dopamine is increasing or decreasing, then it will alter the other one also. Like ये increase होगा तो ये क्या हो जाएगा? Decrease. और अगर वो decrease होगा तो ये increase. और उस condition में यहाँ का जो function था वो क्या होगा? Altered. And patient में क्या हो जाएगी? Disease. Like in case of Parkinson disease, dopamine is decrease. When dopamine is decreased, the activity of dopamine is decreased, then activity of acetylcholine will increase. And because of these two conditions, person will have the 3 classical presentation of Parkinson disease. Because decreased activity of dopamine lead to bradykinesia, slowness of the activity, and muscular rigidity जो आपको देखने को मिलती है. The poke rigidity आती है, वो किसकी वजह से आता है? Due to the decreased activity of dopamine, and due to increased activity of acetylcholine lead to tremors. Tremors सुना है? Resting tremors, slow tremors, pill rolling tremors. वो किसकी वजह से आता है? Due to increased activity of acetylcholine, and due to decreased activity we have 2 symptoms. तो 3 जो symptom आते हैं classical presentation और classical triad of Parkinson. The 2 are because of decreased activity of dopamine and 1 is because of increased acetylcholine activity. Next, the function of basal ganglia. Function. What is the function of basal ganglia? So function can be classified or summarized in 2 types. 2 types हम इसको पढ़ सकते हैं. First is those motor activities which is voluntary. अगर हम voluntary बोल रहे हैं motor activity की बात करें तो उसको कंट्रोल कौन करता है? Voluntary motor activity controlled by कौन करता है? इतना सारा सेरेब्रम पढ़ाया पूरा, इतना कुछ कल पढ़ाया, कुछ नहीं पता है सर, पता नहीं कौन करता है, क्या पता. क्या पढ़ा फिर आप लोगों ने घर जाके? घर जाके क्या पढ़ाई किया? वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी इतना बताया कि पूरी वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी प्राइमरी मोटर एरिया करता है एक्सेप्ट स्पीच मसल, और उसको करने के लिए भी उसी में एरिया होता है. संगीता बीएससी नर्सिंग 2021 बैच की स्टूडेंट है. संगीता आ जाओ, बुला रहे हैं आपको नीचे. So the voluntary motor activity is controlled by our cerebrum, the primary motor area, but few motor activities which is voluntary but not performed by us, it is performed automatically. Voluntary but performed automatically. These are known as autonomic voluntary activity. Like when I'm walking, my hands are swinging automatically. हाथ हिलते चलते, तब आप हिलाते हो क्या? कोई है जो बोलता है मैं हिलाता हूं हाथों को? आप चाहे तो रोक सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं. It is in your control. It is in your control. The motor, it is a voluntary activity. हम चाहे तो हिला सकते हैं, हम चाहे तो नहीं हिलाएं, हमारी इच्छा है. That's why it is known as voluntary. But it is performed automatically. आप चल रहे हैं तो हाथ ऑटोमेटिक हिल रहे हैं. So this is known as autonomic voluntary activity. This is known as autonomic voluntary activity. Eye blinking. आप चाहो तो मत करो, आपके हाथ में, बट ये ऑटोमेटिक होता रहता है. ऑटोमेटिक होता है. So this is also type of autonomic voluntary activity. Saliva. एक आप खाना खाते हैं तो आप देखेंगे आप उसको एंगल कर रहे हैं, आप उसको एंगल स्वेलो आप कर रहे हैं. जब आप फूड इंटेक करते हैं तो खाने को स्वेलो कौन करते हैं? आप कर रहे हैं. पहले उसको मैस्टिकेट करते हैं, देन उसको स्वेलो करते हैं. जब आप चाहे तब करेंगे. लेकिन हमारे ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड कंटीन्यूअस सलाइवा बनाती है एंड वो ऑटोमेटिकली अंदर एंगल होता रहता है. आपको पता भी नहीं चलता है, वो अंदर जाता रहता है. होता है? यस और नो? सो दैट इज आल्सो ए ऑटोनोमिक वॉलंटरी एक्टिविटी. सो फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है यहाँ पे? ऑटोनोमिक वॉलंटरी एक्टिविटी. These are controlled by our basal ganglia. Second, those activity
which is come under the fine motor activities, fine motor skills. Second कौन सी है? Fine motor activity. Fine motor activity. As I know that my handwriting is not that much good, अच्छी नहीं है, because my basal ganglia is not that much trained. So your handwriting is controlled by your basal ganglia. Other examples like needle में thread डालना, देखा टेलर होता है, वो ऐसे करता है, ये थ्रेड इधर आ जाता है, और आपको या मुझे दे दे तो मैं तो सुबह से शाम तक भी नहीं कर पाऊंगा, होता है, वो इसको करते आप इधर है जाओ उधर से रहा होता है, इधर से कर रहा हो इधर जा रहा होता है. यस, वो स्किल जो है, दिस इज द फाइन मोटर स्किल एंड दिस इज प्रेजेंट थ्रू दिस बेसल गैंग्लिया. तो ये दो फंक्शन कौन कराता है आपका? बेसल गैंग्लिया. ऑटोनोमिक वॉलंटरी एक्टिविटी एंड फाइन मोटर एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे. सो ये हमने लिख दिया कल. Next function, it controls the autonomic voluntary movement of body like swinging of arms during walking, engulfment of saliva, blinking of eyelids, and control the fine motor movement like handwriting, threading in the needle. These are the function which is performed by basal nuclei, and this is the end of basal nuclei. क्लियर? ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मूव करें. There are two types of function controlled by the basal ganglia. One is the fine motor activities and second one is autonomic voluntary. These are the voluntary but performed in our body as an autonomic or automatically. The next structure is the thalamus. A very small structure, बहुत ही छोटा सा structure है thalamus. तो राजस्थान में सेंटर जयपुर है? नहीं है, राजस्थान में है ही नहीं. फिर आप लोग कैसे जाओगे? दिल्ली जाओगे? राजस्थान में ही सबसे ज्यादा नर्स होती है और राजस्थान में ही सेंटर नहीं होता है. यस और नो? नर्स तो राजस्थान में ज्यादा नहीं होगी, वैसे तो हमारे से ज्यादा दूसरे स्टेट में और होगे. लाइक इन पंजाब इज आल्सो ए हब फॉर नर्सेस, वहां भी बहुत सारी नर्सेज होती है. बट द गवर्नमेंट सेलेक्टेड नर्सेज की अगर हम बात करें तो रेशो किसका जा रहा है? वहां पे राजस्थान वाले ज्यादा मिलते हैं. आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कोई सा छोटा सा इंस्टीट्यूट भी होगा, वहां भी आपको कौन मिलेगा? एक राजस्थान में जरूर मिलेगा. सो उसको अब हमने तोड़ दिया है. अब हमारे पास यहाँ पे राजस्थानी बहुत कम है. यू ऑल आर फ्रॉम आउट ऑफ राजस्थान, और हम सबको भेजेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एम्स में. यस, बहुत जल्दी आने वाला ईएसआईसी का रिजल्ट आएगा. फिर उसके बाद नॉर्थ रेलवे जाना, सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायनसेफेलॉन का पार्ट है. सो थैलेमस मेक्स measures about 3 cm in length and makes up around 80% of the diencephalon. Diencephalon का मैक्सिमम पार्ट कौन बनाता है? थैलेमस. नेक्स्ट, consist of paired oval masses of gray matter organized into white matter. अभी मैं बना के दिखाऊंगा कैसे ये देखने को मिलेगा आपको. The thalamus is the major relay station for most sensory impulses. आपको कल बताया था मैंने, कल परसों, relay station for sensory nerve. Thalamus except olfactory nerve, except olfactory nerve. So thalamus is the major relay station. इसका एक ही काम है, relay station. इससे जितनी भी सेंसरी नर्व्स है वो मूव करके जाएगी अपने एरियाज के पास में. समटाइम्स आल्सो नोन एज इट प्रोवाइड द पेन गेट. अदर वर्ड में हम इसको क्या बोलते हैं? पेन गेट. सो क्वेश्चन आया था एक बार, द पेन गेट इज प्रोवाइडेड बाय ऑप्शंस थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और जो भी बेसल गैंग्लिया. तो आंसर क्या लिखना है? थैलेमस प्रोवाइड द पेन गेट एंड